मेरा करेक्शन डिलीट हो गया था। हाँ आगे मतलब सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि छोटी जजमेंट्स पढ़े पहले। अब जैसे आज ये, यस मैम, जैसे इस, गुड मॉर्निंग मैम, इन दिस स्क्रीन जो आपके सामने शेयर किया हुआ है, इसमें I'll go to the second page. This is the PIL centric judgment in our leading cases. D.K. Basu at serial number list leading case number 11, Visakha versus Rajasthan. Dr. Ashwini Kumar, it is at 54. I guess it was Ashwini Kumar. Okay. Then Selvi, Nalsa Selvi, Sakti Vahini, CMC Vellore, Common Cows. Two judgment of the common cows is there. Illegal mining related and judicial activity. मैं थोड़ा सा इसको एलिबरेट करूं और एक डॉक्यूमेंट मैंने आज सुबह में शेयर किया है, आप लोगों में से किन लोगों ने देखा उसको? Have you seen that? Seen sir, uploaded also. इसके लिए सॉरी, जजमेंट ऑन पीआईएल केस सर। उसमें है क्या है कि इन सारे जजमेंट जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, प्रोबेबली एक दो छूटा होगा शायद, इन सबका कंपाइलेशन, हेड नोट्स, कंप्लीट हेड नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है. लेट मी जस्ट टेक यू ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. दिस इज कंसर्न टू PIL. वन इज द बलवंत सिंह चौफर, जिनके हेड नोट्स, देन विशाखा, और इसको मैंने सॉर्ट किया है नॉट इन सीरियल नंबर. इसको सॉर्ट करने के लिए मैंने हेड नोट्स की जो पेजेस हैं उसके हिसाब से सॉर्ट किया है. छोटे छोटे जजमेंट्स जो हैं उसको मैंने ऊपर रखा है और जो लार्जर हेड नोट्स हैं उसको मैंने लास्ट में रखा. Am I clear up to this point or not? यस सर. Yes sir. तो यदि मैं इसको पास करूं, जरा सा पास करना क्या है, ये यहाँ दीज आर द बुक मार्क पार्ट. यदि मैं इसको क्लिक करूं तो दिस इज कमिंग टू द बलवंत सिंह चौफर. अगेन मैं थोड़ा और ऊपर चला जाऊं वापस, और यदि मैं इसकी बात करूं, CMC वेलोर विशाखा, क्लिक करते ही ऑन स्क्रीन दिस पर्टिकुलर पार्ट इज देयर. सो इसको आप अपने टैब वगैरह पे भी स्टडी कर सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि इस पेज को जब आप देखें तो नीचे हेड नोट्स पे भी इसके ये लिखे हुए हैं, हेड नोट्स ऑफ लीडिंग केसेस 13, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स एंड सप्लीमेंट्री दिस SCR इज देयर. सो इस तरह से मैंने अरेंज किए हैं एंड दीज आर द जजमेंट कंसर्न द PIL. नाउ आज का डिस्कशन ये है कि आज हम ये कंप्लीट PIL को डिस्कस करने जा रहे हैं. Entire head notes of all the PILs available in the list. Probably these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and including that Balwant Singh Chopal. 9 judgments are in the list. So let us start the discussion of all these things. Yes sir. तो हम लोग शुरू करते हैं सीधा सीधा बलवंत सिंह चौफल से, क्योंकि इसको रिविजिट करना रिक्वायर्ड है. इफ यू विल सी द बलवंत सिंह चौफल, और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि पहले हम इसके फैक्ट्स को स्टडी करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वन बाय वन रेशियोज लेट डाउन अ पॉइंट वाइज उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस summarize through this italic part. So बलवंत सिंह चौपल का फैक्ट क्या था, आप लोगों को पता है? So many times we reflected this Balwant Singh Chopal case. So let me read out the facts available in the head notes, and that facts is started from here and coming to this particular point. So let me read out this fact.
a writ petition was filed as a public interest litigation by the respondent in the High Court challenging the appointment of the Advocate General for the state on the ground that the incumbent had crossed the age of 62 years before his appointment to the post, and therefore he was not eligible to hold the post. The High Court directed the state government to take decision on the issues within the time stipulated in order and aggrieved the state government file this appeal. क्या समझ में आया इतना से? क्या क्या इंफॉर्मेशन? क्योंकि अब जो इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स है उसको पिकअप करना भी बहुत जरूरी है। और यदि मैं इस पॉइंट को देखूं, ये हेड नोट्स यहाँ लिखा हुआ है। आपको पता है हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट का एज कितना है? 62. हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट होता है who is having equivalent to the high court judges. Eligibility must having equivalent to the high court judges. So ये बलवंत सिंह चौपल was an advocate in the Uttarakhand. He was challenged in 2010 around somewhere उससे पहले उन्होंने ये चैलेंज किया है कि एडवोकेट जनरल का जो अपॉइंटमेंट है और इनका जो एज है वो 62 पास कर गए तो ये इस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते, ये चैलेंज किया गया था। सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन नहीं है, अगला इंफॉर्मेशन ये है, यहां पर आप जरा ये लाइन को देखिए, क्रॉस्ड द एज ऑफ 62 years before his appointment to the post and therefore he is not eligible to hold the post. It was the case before High Court, and the High Court directed the state government to take decision on the issues within the stipulated time in the order, meaning thereby कि High Court ने इस writ petition को, इस PIL को allow किया और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप इस इश्यूज को रिजॉल्व करें वेल विद इन टाइम। इस जजमेंट से एग्रीव होकर के स्टेट गवर्नमेंट अपील फाइल की इन दिस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड देन सुप्रीम कोर्ट गिविंग डायरेक्शन टू द हाई कोर्ट एंड एडजॉर्न द अपील फॉर कंप्लायंस देयरऑफ, कोर्ट हेल्ड। इसके बाद कोर्ट ने हेल्ड किया क्या क्या वो आपके साथ। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दिस PIL वाज फाइल्ड बाय एन एडवोकेट, नंबर 1. नंबर 2, related to the age of the Advocate General, and number 3, it was the PIL. इस पूरे जजमेंट में कोर्ट ने सबसे पहले एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ये आप देखिए, दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम 1.1 हियर और ऑफ कोर्स दिस इज 1.1, 1.2, 1.3. लेट मी जस्ट गैदर, मैं इसी ऑर्डर में हर जजमेंट पे जाऊंगा ताकि हम लोग जरा गैदर कर सके इसमें कितने पॉइंट है, जरा गो थ्रू होते हैं। दिस इज द 1.1 to 1.3. Next, 2.1 to this is 2.4, and again 3.1 to 3.5, 4.1 to this is 4.6, I guess, yes, 4.6 and 5, and finish
ये स्ट्रक्चर है ना पूरा? Yes, sir. So 5 different points was dealt with in this particular judgment. What was those 5 points? Just pick up the points. इसलिए मैं अब सीधा इसके बाद क्वेश्चन पे एंटर करूंगा। मैं थोड़ा सा और रफली वापस रिविजिट करते हैं कि कैसे ये पॉइंट अरेंज था। इटैलिक हेड नोट्स पहले था इस पेज पे, देन ये फैक्ट था जो हमने रीड आउट किया, देन इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1.1, then it went to the 2.1 and 2. Up to 2.4, then 3.1, लेकिन 3.1 से पहले यहाँ एक हेड नोट्स लिखा हुआ, इसके ऊपर एक लाइन, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। So 3.1 to 3.5 they discussed about how the PIL was evolved. यदि मैं थोड़ा और आगे प्रोसीड करूं, if I will go to a particular 4, yes, this is the 4.1, इसके ऊपर बोल्ड लेटर पे एंड कैपिटल वर्ड्स में एक लाइन लिखा हुआ है, दिस इज कंसर्न टू व्हाट? अब्यूज ऑफ द PIL. So 3.1 is confined to evolution of PIL, and 4.1 to 6 is concerned to the abuse of PIL. And finally, if I will go to the next page, this is 5.1 and all. This is the particular direction issued in this particular case regarding PIL. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. what was the point 1.1 and 1.2? Let us examine first. Then we will enter into later. So, if I will go to this 1.1, sorry. अब देखिए, रीड आउट करते हैं, अपने आप समझ में आएगा ये क्या है, क्योंकि समझने का यही तरीका और इसी तरीके से आप लोगों को सारे जजमेंट पे अप्रोच करना है। In the view of the clear enumeration of the law in various judgments, the controversy has been fully settled that the Advocate General for the state cannot be appointed after, can be appointed after he or she obtain the age of 62 years. The first line says, क्या कहता है? This controversy has been fully settled. So, res judicata will operate. ये लिखा हुआ नहीं है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। जो इशू सेटल हो जाए, उस इशू को वापस अगेन एंड अगेन रीओपन कर सकते हैं? No. No. Sometimes yes, if there is some compelling circumstances are there. तो एक चीज पॉइंट करने वाली, नोट करने वाली बात है, और वो डिस्ट्रिब्यूटेड रिलेटेड है। In view of the clear enumeration of the law in the various judgments, the controversy has been fully settled. This is the finding of the court. Ratio fully settled regarding that the Advocate General of the state can be appointed after attain the age of 62 years. Similarly, the Attorney General of India can be appointed after attain the age of 65. In the Y65, अब आप लोग समझ लीजिए, वहां पे concerned authorities and court have consistently taken the similar views. Am I clear up to this point?
Yes, sir. Now, in judgment, this is a head notes, not a judgment. Am I clear up to this point also? Yes, sir. So, referring under bracket this para number 50, which is available at page number 706 H to 707 E2P. सो ये जो कंक्लूजन अभी हमने रीड आउट किया वो जजमेंट में पैरा नंबर 15 पर अवेलेबल है. दिस इज द रेफरेंस. ये कहां से हेड नोट्स पे आया है? इफ यू विल गो टू द जजमेंट एट पैरा नंबर 15 you will find out the same. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Now, this is the authentication of that particular part. 1.1 is taken from para number 15. And at the judgment, this finding was taken out on relying on these two judgments, which is written there, they relied on. So, ये proposition या tools या techniques या materials कहाँ से आया? It came through already laid down in the judgment 1962 supplementary 3 SCR 89, cause title Atlas Cycle Industries Limited Sonipat versus the workman, their workman. And also in the another judgment, Vinay Kant Mani Tripathi versus Union of India and others, it was decided in 1993, sorry, reported into 1993 for SCC 49. So इस रेशियोज पर रिलाई करने के बाद ये कंक्लूजन पे. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. मैं इस तरीके से हर बार नहीं जाऊंगा. मैंने आपको रास्ता बतलाया है कि कैसे कैसे जजमेंट वहां पर ट्रेवल हुआ है और इससे हम इस हेड नोट से क्लू कैसे ले सकते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल कहां से इनहेरिट किया गया है, रियलाइज किया गया है. So during relying on this particular part, which is exactly mapping for this particular circumstances, they also discussed all these cases, referred to all these cases and discussed all these, but relied on the proposition laid down in this particular case. So that's what written here, the relied on. मुझे ये बतलाना था, समझाना था आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिलाइड ऑन, राइट. दूसरा पार्ट ये बतलाना था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफर्ड टू. रेफर किया, डिस्कस किया और अल्टीमेटली कंक्लूड करके वहां पर नथिंग इज इवॉल्व, जस्ट इनहेरिटेड अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एम आई क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Any ambiguity, please let me know so that we can fix it. Otherwise, अब मैं इस तरह से दिखाऊंगा नहीं, full speed में मैं proceed करूँगा. Now, it was the first point concerned to realize on this, जो कि जो matter settle हो चुका है, repetitively, similar view, consistently taken the similar view, उसको reopen नहीं करना है. It is a residual. Now, come to the point 1.2. This is something little bit different but concerned to this particular part. It's a reasoning. When the controversy is no longer res integra, this is the answer of another questions कि यदि कोई भी कंट्रोवर्सी सेटल हो गई है तो कब रीओपन हो सकती है और कब नहीं. हम एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते इट वुड नॉट बी रीओपन, बट यदि रीओपन के स्कोप हैं तो कब. रेस जुडिकेटा इज द वन पार्ट दैट पर्टिकुलर इशू इज सेटल्ड. इशू सेंट्रिक, रेस जुडिकेटा इज द इशू सेंट्रिक, एंड रेस इंटीग्रा इज दोस पार्ट some issues is left remaining undecided. So this part says when
controversy is no longer res judicata, मतलब nothing is left completely settled. The filing of indiscriminate petition raising the controversy repeatedly creates unnecessary strain on the judicial system and consequently lead to inordinate delay in disposal of genuine and bona fide, which is written at, this is the conclusion taken from para number 9 to 20. खैर ये रेफरेंस पैरा को अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग खुद नोटिस कीजिए. But the thing is this, यदि ऐसा किया जाए, what is its consequence? Consequence is creates unnecessary strain on the judicial system and consequently lead to inordinate delay in disposal of other genuine and bona fide cases. Am I clear up to this point? Yes, sir. Yes, sir. So the important line जो आपको कैप्चर करनी चाहिए वो क्या करनी चाहिए, वो ये है, when the controversy is no longer res integra, the filing on indiscriminate petition raising the controversy repetitively creates unnecessary strain on the judicial system और उसके consequence this is not in good part. So ये check करना पड़ेगा for filing any PIL, is there any res integra remaining or not. If this is remaining, then the scope of reiterate that issues is available, otherwise not. PIL में जो हम इश्यूज रेज करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में हमको एक छोटा सा रिसर्च करना चाहिए और उस रिसर्च में ये पता करना चाहिए कि क्या ये फुल्ली सेटल है या समथिंग इज कंट्रोवर्सी रिमेन्स. इफ कंट्रोवर्सी रिमेन्स then we can reach it, otherwise not. So कब हमको PIL या ये एक controversy issue not only concerned to the PIL anywhere we can reach or not. So this is 1.2. Now 1.3 says in the instant case one of the petitioners before the High Court, this is coming to the fact of this particular case. In the instant case one of the petitioners before the High Court was a local practicing lawyer. The state of Uttarakhand was the part of the state of UP. A few years ago, in the state of UP, a large number of advocate generals appointed were beyond 62 years of age at the time of their appointment. The petitioners ought to have bestowed some care before filing the writ petition in PIL under Article 26 and 26 of the Constitution. This is caution to the petitioner and especially those who are lawyers. Similarly, it is a bounded duty of the court to ensure that the controversy once settled. Similarly, this was the duty of the lawyer or petitioner. Now another part, the duty for the court. Similarly, it is a bounded duty of the court to ensure that the controversy once settled by an authoritative judgment should not be reopened unless there are extraordinary reasons to do so. तो किसी भी कंट्रोवर्सी को कब रीओपन अलाउ करना चाहिए बाय द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट के लिए भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है और पिटिशनर्स के लिए भी. और कोई भी पिटिशनर हो कमिंग थ्रू द लॉयर, और लॉयर है तो लॉयर है ही, दे हैव टू फर्स्ट चेक, फर्स्ट डू सम प्रिलिमिनरी रिसर्च. ये नहीं कि आया और फटाफट फाइल किया, आया और फटाफट फाइल किया, उसका कॉन्सिक्वेंस पे लिखा हुआ है.
एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबल लॉयरिंग। वो आप कोर्ट को भी इस चीज की याद दिला सकते हैं कि कहां पर ये होना है या नहीं। तो 1.1 to 1.3 is over. What was the moral of the story? कब फाइल करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। Two technical terms came into the picture: res judicata and res integra. Yeah. And the last line, last paragraph and last line clearly says the petitioners को क्या करना चाहिए here, और साथ में कोर्ट की क्या ड्यूटी है जो हम आप आर्गुमेंट के समय या पिटिशन में आप असिस्ट करेंगे, और वो याद दिलाएं। भारती जी काइंडली म्यूट कर लें, भारती मल्होत्रा जी। Okay, sorry. सो क्लियरली यहाँ पर ये 1 पॉइंट का मैसेज जो 1.1, 1.2, 1.3 हेड नोट्स में दिया गया है, हैव यू कैप्चर्ड? मतलब अब तो समझ में आनी चाहिए आपको। Yes, sir. मैं आपको इसके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं। मेयरली रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ऐसा हम लोग लॉ पढ़ते समय नहीं करते। लॉ पढ़ते समय ब्रेन ओपन रखते हैं और ब्रेन अप्लाई करते हैं। जैसे अभी हमने 1.1 में एक वर्ड पिकअप किया, दैट वाज द रेस जुडिकेटर। 1.2 पे मैंने पूरे पैराग्राफ को मैं कहूं और सिर्फ रेस जुडिकेटर लिख दूं, और दूसरे पैराग्राफ के लिए मैं एक और वर्ड यूज करूं, दैट इज रेस इंटीग्रा, और तीसरे पैराग्राफ के लिए मैं ये कहूं, वो कहूं मैं ड्यूटी ऑफ कोर्ट एंड पिटिशनर, एंड लाइन में एक लाइन और कहूं तो वो है स्कोप, जो कि लास्ट लाइन है। तो जो ये कहता है reasons for doing so, it is under the duty of that particular part. So हर एक लाइन को मैं डायग्नोस करूं, this is the duty of the court, this is the duty of the petitioner. So ये बिल्कुल क्लियर है कि कब कोई भी इश्यूज को रीओपन करें और ना करें। Am I clear about this point or not? Yes, sir. Yes, sir. यदि आपके क्वेश्चन रिस जुडिकेटा, रिस इंटीग्रा, कोर्ट ड्यूटी से कंफाइंड हो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे, तब आपको आंसर के लिए 1.1 जाना चाहिए, और जब आप नोट्स लिखेंगे तो 1.1 में क्या लिखेंगे, 1 में क्या लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट वाज डील्स विद कि कब एक लाइन में यदि मैं समझना चाहूं आप लोगों से कि 1.1, 1.2, 1.3 की समरी क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी बिहाइंड इट। द मोरल ऑफ द स्टोरी कि तब फाइल करते समय, कोई भी पिटिशन फाइल करते समय हमको क्या ड्यू केयर लेना चाहिए, ड्यू मेजर क्या है, वो है एक लाइन में सिर्फ कहूं। थोड़ा और मैं लाइन को बढ़ाऊं और थोड़ा सा इनके लैंग्वेज में देखूं कि इन्होंने क्या नोट डाउन किया। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इटैलिक पार्ट। एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। अब देखिए इस इटैलिक पार्ट को मैं सिर्फ यहां पढ़ूंगा और इसमें आप समझने की कोशिश करूंगा कि यार इन्होंने क्या कहा। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ओनली। This is related to Article 165, 217, 226. What does it mean? 165 is appointment of Attorney General. 217 is the appointment of Advocate General. 226 is the writ petition. Now, ये clue दे दिया कि concern to what? Now, Advocate General for the state, यहाँ particular case, eligibility, एज, यहां से यहां तक कोई सेंटेंस नहीं है, बट सब कुछ आपको क्लू मिल चुका है, isn't it? और आपको यदि
सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो कुछ इस तरीके से नहीं कह सकते हैं. The eligibility specifically regarding age of the Advocate General of the state was and issues involved in this particular case. यदि मैं इस तरह से सेंटेंस बनाऊं तो कितना गलत होगा कितना सही होगा? सही होगा सर. मेरा पॉइंट ये है कि यदि आपको इस तरीके से हिंट दे दिया जाए और कहा जाए कि आप सेंटेंस बनाइए, कैन यू डू दैट? Yes. Yes sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपको ये आर्टिकल भी दे दिया जाए और उसको भी इंसर्ट करके एक पैराग्राफ या सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए, कैन यू डू दैट? द आंसर इज यस. Yes, sir. लेकिन दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आप हेड नोट्स पढ़ चुके हो. अदरवाइज देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी टू डाइवर्ट द सेंट्रल पॉइंट. मैं क्या बताना चाह रहा हूं? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इतना पॉज लेकर के, इतना टाइम दे करके क्यों नहीं कहना चाहिए? थोड़ी देर में मैं कम अप होता हूं कि दिस वाज द इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस एंड दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट. सो हेल्ड से पहले का पार्ट एंड हेल्ड से बाद का पार्ट क्या देखिए. सो फाइंडिंग वाज ऑन यहां से लेकर के यहां तक, फिर वो एक माइनस है, डैश है, फिर यहां से यहां तक है और फिर एक डैश. 3 सेगमेंट है आफ्टर हेड. Let us read and try to develop the sentence. It is a fully settled that the Advocate General for the state can be appointed after attained the age of this. This was the first finding. Point 1. Another. Similarly, the Advocate General for India can be appointed after the age of this. This is another finding. And PIL के बारे में अब आप पढ़े हुए हैं नीचे तो आप लिख सकते हैं. So, PIL must be invoked after following the due care, and court is the duty bound to check the certain things to allow or decline the PIL, isn't it? तो अब वो 3 पैराग्राफ पढ़ने के बजाय आपको सिर्फ इतना आपके नजर से जाए और इसको लेकर के आप बंद करें और 2 मिनट सोचें कि क्या क्या पैराग्राफ इसका बन सकता है एंड ट्राई टू डेवलप इट एक्यूरेटली. तो एक मेंटल एक्सरसाइज होगा, एक कंस्ट्रक्शन होगा ब्रेन में, एंड यू वुड बी एबल टू डेवलप योर ओन प्रोपोजिशन इन योर ओन लैंग्वेज एंड राइट इट डाउन इमीडिएटली इनटू द आंसर शीट आफ्टर रीडिंग दिस small things only. This is the beauty of SCR Headnotes. And this is not the only case. सारे जजमेंट पे आपको ऐसे ही करना है. हमको केस समझने के लिए पूरे जजमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं. इश्यूज समझने के लिए पूरे जजमेंट की जरूरत पड़ी नहीं. हमने 1.1 पढ़ा और उसका शॉर्ट नोट्स पढ़ा. यदि मैं सिर्फ इसी को पढ़ता, we are able to understand we are take the clue of the cases. The answer is yes. आप देखिए इतने बड़े जजमेंट का एक छोटा सा पोर्शन हेड नोट्स का एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के भी हम समझ जाते हैं कि इशू क्या था. Because our brain mind is with me and I am applying in this regard. ऐसा नहीं कि इसको मैंने ब्लॉक किया और सिर्फ पढ़ना शुरू किया. That's what the application of mind. And उसको चेक करते रहते हैं. Because you know the basic principle behind it. मेरा पॉइंट सिर्फ ये पॉइंट आउट करने का था कि हेड नोट्स पढ़ने के बाद एक बार आपको कहानी पता चल जाएगा. उसके बाद ये लाइन काफी है योर आंसर बिल्डअप करने के लिए, और इससे जरूरत पड़े तो हेड नोट्स का भी हेल्प ले लीजिए. आपको पता चल गया ना 1.1 पे क्या है. नाउ अब मैं 1.2 एंड 3 के ऊपर मूव करूंगा
और ये हेड नोट्स को डायग्नोस करने के लिए इटैलिक पार्ट को मैं आपके लिए छोड़ूंगा. Let us come to the 2. Point 2 says, so first point was concerned to 1.1 was concerned to the मैंने कब इन्वोक करना चाहिए. 2 point is concerned to the definition of PIL. I already pointed out and picked up. 3 is concerned to the evolution of PIL, 4th is concerned to the abuse of PIL, and 5 is the ultimate direction. So now we are going to enter into this 2, and 2 is the most important part of this particular segment. Everything is the most important. I'll say that everything is the most important. But थोड़ा यहाँ focus करते हैं because this is the source and root and core and fundamental central part. PIL has been defined. See 2.1. PIL has been defined by this quote and star. Reference point, and this is here is the another star. This is connecting these 2 points. Now, again, I would like to complete this. Public interest litigation has been defined by this court as a cooperative or collaborative effort by the petitioner, public authority and the judiciary. यहाँ से देख के ये पार्ट मैं हाईलाइटेड यूज करूँ so that we can do clearly. सुधीर जी, कुछ ऐसा आवाज आ रहा है जैसे लग रहा है कहीं अगल बगल सांप घूम रहा. Now, PIL has been defined definition by this court as a cooperative or collaborative efforts. जब कॉपरेशन की बात आती है, कैलिब्रेशन की बात आती है, एक यूनिट नहीं होगा, मल्टीपल यूनिट आते हैं. Who are the multiple unit? The multiple unit are the petitioner, 1, the state or public authority, another, and the judiciary. What is the objective? To secure observance of the constitutional or basic human rights. For whom? Benefits and privileges upon poor, downtrodden and vulnerable section of society. अब आप ये समझ लीजिए कि ये कहां से आया, कहां है जजमेंट और कहां से रियलाइज हुआ था. This is the entire system. कैसे डिकोड करेंगे आप इस पर्टिकुलर पार्ट को, इस हेड नोट्स को? यदि पूछा जाए कि where it was defined the PIL first time in the judgment, it was the People's Union for Democratic Rights and Others versus Union of India and Others, 1982, 3 SCC 235. और इस डेफिनेशन को वहां से इनहेरिट किया गया है इस पर्टिकुलर पार्ट पे, रियलाइज करते हुए. और व्हाट इज दैट डेफिनेशन? दिस डेफिनेशन इज ब्रोकन इनटू द 4 पार्ट. First part is, what is this? It is a cooperative or collaborative effort. PIL is an effort.
सिंपल एफर्ट नहीं है, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट, एक दूसरे को सहयोग करते हुए और मिलजुल कर। जहां मिलजुल करके और एक दूसरे की बात आती है तो और भी कई लोग होंगे, कई यूनिट होगी, कई एंटिटी होगी. सो दीज आर द वन petitioner, another state or public authority, the government side, executive, and third is judiciary. इन तीनों का कलेक्टिव एफर्ट से किया गया. ऑब्जेक्टिव क्या है? To secure observance of constitutional or basic human rights. Basic human rights and constitutional observance के लिए. For whom? किसके? Question is benefits and privilege upon poor, downtrodden and vulnerable section of society. यानी मैं कुल मिलाकर के ये कहूं, TIL से पहले आपको यहां से लेकर के यहां तक अक्षरशः रट लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और कम से कम 5 बार लिख लेना चाहिए. क्या गलत होगा? क्यों नहीं करना चाहिए? हम PIL के बारे में करने जा रहे हैं तो PIL का डेफिनेशन जो कि मिनिमम वर्ड होता है, ऑप्टिमम वर्ड होता है और कंप्लीट मैसेज कंटेन करता है, इसको तो कम से कम रखना चाहिए. और ये भी याद रखना चाहिए कि इसका सोर्स कहाँ है और ये कहाँ कहाँ डिस्कस किया गया है. जैसे बलवंत सिंह चौफुल में डिस्कस किया गया. वी आर एट 2.1. अब इतना होने के बाद बहुत सारी उत्सुकता होती है कि अब इसमें और क्या है और क्या है, तो इसका कुछ तो और एलिब्रेट करें इसको. तो उसका एलिब्रेशन नीचे है जो कि 2.2, 2.3 और 2.4 में है. मैं एक बार और रीड आउट करूंगा और वहां रुकूंगा नहीं. आप so public interest litigation is an extremely important jurisdiction exercised by the Supreme Court and the High Courts. It is the product of realization of the constitutional obligation of the court. The court in a number of cases have given important directions and past directions which have brought positive changes in the country. The public interest litigation is upshot and product of the court's deep and intense urge to fulfill its bounden duty and constitutional obligation. The court's directions have immensely benefited marginalized section of society in a number of cases. It has also helped in protection and preservance of ecology, environment, forest, maritime life, wildlife, etc. The court's direction to some extent have helped in maintaining probity and transparency in the public life. ये क्या था? ये बताया गया था कि पब्लिक लाइफ के PIL के क्या क्या फायदे, कहाँ कहाँ ये यूज हुआ, क्या रिजल्ट निकला है. इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 2.1. इम्पैक्ट रियलाइज बाय द नेशन. और उसमें 3 डिफरेंट सेक्शन यहां पर यूज किया गया है जिसको आप जरा ध्यान से देखिए. द कोर्ट डायरेक्शन हैव इमेंसली बेनिफिटेड who? First, marginalized section of the society in a number of cases. 1. It has also helped in protection and preservance of ecology, environment and wildlife. 2. The court directions to some extent have helped in maintaining probity and transparency in public life. 3. ये इंडिकेट करता है 3 डिफरेंट पेजेस ऑफ PIL. एक में मार्जिनलाइज सोसाइटी कनेक्टेड है, दूसरा एनवायरनमेंट है एंड तीसरा पब्लिक पॉलिसी है, जहां पे प्रोबिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड, isn't it?
और मैं रीड करता हूँ. The court, while exercising its jurisdiction of judicial review, realized that a very large number of sections of the society became an extremely poverty, ignorance, discriminated, and illiteracy has been denied justice for time immemorial, and in fact they have no access to the justice, predominantly to provide access to the justice to the poor, deprived, vulnerable, discriminated, and marginalized section of the society. This court has initiated, encouraged, and propelled the PIL. This is the objective behind the PIL. क्यों आया? Once we are saying they have no access to the justice. अब जिसको access ही नहीं है by any reason, that reason is already noted down here. These are poor, इकोनॉमिकली पैसे नहीं है कि आपको कोर्ट फीस को और अदर पार्ट्स को प्रोवाइड कराया जाए. डिप्राइव, वेनरेबल, डिस्क्रिमिनेटेड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. दे कैन नॉट अप्रोच, इवन दे हैव राइट, और जब राइट बिल्कुल नहीं. हाउ दे कैन अप्रोच इट? So इसके बिहाफ पे the petitioner is there. ये तीसरा पॉइंट जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, पीआईएल में अपने इंटरेस्ट के लिए पीआईएल नहीं है, अपने राइट के लिए नहीं. इनके राइट के लिए वो है जो थर्ड पर्सन, जिनका लोकस ही नहीं एग्जिस्ट करता है. आप जरा इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा सोच करके देखिए कि ये क्यों डिफरेंट है. यदि कोई रिट पिटिशन आप फाइल करते हैं या कोई सूट फाइल करते हैं या पिटिशन फाइल करते हैं, हु कैन फाइल इट? द एग्रीड पर्सन. दैट इज ओनली कंसर्न, और उन्हीं को अलाउ है. यहां पर एग्रीड पर्सन को तो बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी नहीं है फाइल आने का, यानी ये केस तो क्या है. सो एग्रीव्ड पर्सन, लोकस स्टैंडाई जो होता है वो बिल्कुल एग्रीव्ड पर्सन को ही अलाउ करता है कि लिस्ट के अंदर एंटर कीजिए, राइट इन्वोक करने. इस जगह पर ये कॉम्प्रोमाइज है कि वो जो लोकस है, जिसका लोकस है, वो तो आ ही नहीं सकते, तो उनके बिहाफ पे कोई और थर्ड पर्सन वो यहां पर आएगा जिसका लोकस नहीं है. दैट इज कॉल्ड लोकस लिबरलाइजेशन. मतलब जिसका लोकस नहीं है उसको आप कह रहे हैं कि आप लेकर के आइए, लेकिन राइट इंश्योर. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन सुप्रीम है, वो मैंडेट होना चाहिए, वो रियलाइज होना चाहिए, हुएवर इट में भी. लेकिन लोकस जो है ना, वो केस क्लियर होना चाहिए, लेकिन कोई भी आप लेकर के, आपको लगता है कि आप ला सकते हैं तो प्लीज कम. मैंने पॉइंट आउट किया, दिस इज कंसर्न टू द लोकस. जैसे जुरिडिक्शन की बात करते हैं वैसे लोकस की बात करते हैं. जुरिडिक्शन इज ऑन पार्ट ऑफ द कोर्ट और अथॉरिटी, एंड लोकस ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी. 2.4 क्या कहता है? लेट मी रीड इट आउट. PIL is not in the nature of adversary litigation, but it is a challenge, an opportunity to the government and its officers to make basic human rights meaningful to the deprived and vulnerable section of the community, and to assure them social and economical justice, which is the signature tune of our constitution. This word is available, social and economical justice, in our preamble. The government and its officers must welcome public interest litigation,
because it would provide them an occasion to examine whether the poor and downtrodden are getting their social and economical entitlements, or whether they are continuing to remain victims of deception and exploration at the hand of a strong and powerful section of the community, and whether social and economical justice has been and has become a meaningful reality for them, or it has remained merely a teasing illusion and a promise of unreality. So that in case the complaint in the public interest litigation is found to be true, they can discharge of their constitutional obligation, root out exploitation and injustice, and ensure to weaker section their rights and entitlements. Found to be true that it is directly connected with the article 32. मैं थोड़ा सा मैं article 32 के ऊपर आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूँ. Especially article 32(2). The Supreme Court shall have power to issue such an order, direction, and all things, whichever may be appropriate. नहीं समझना इसको. Or the enforcement of any of rights conferred by this part. Read this particular part. Especially shall have power to power. Read this part with this particular objective. Court is the duty bound to protect the right of the citizen. Once the things is established before the court. मैं यहां पर ये भी पॉइंट आउट आपको करना चाह रहा हूं. These are the certain things which must have to be fulfilled, like ये question, whether the poor and the downtrodden are getting their social and economical entitlements. इस सवाल के जवाब में ही आपको केस मेडअप होता हुआ नजर आएगा जब कोई केस आपके सामने आता है या विक्टिमाइज होता है. So this paragraph is just elaboration of that para 1. 2.1 का एलिब्रेशन. थोड़ा और मैं आगे चलूं. No, it was the 2.4 only. And done. Let us just conclude it up. 2.1 पढ़ा, 2.2 पढ़ा, 2.3 पढ़ा, 2.4 पढ़ा, पूरा पढ़ा, ढंग से पढ़ा, टाइम देकर के पढ़ा. Moral of the story is this: all the paragraph is confined to 2.1. तो इस सब में जो मेन पैराग्राफ है वो 2.1 है. 2.2 का समरी क्या है, ये क्यों लिखा गया है? इट इज एक्सपेंडेड कि कहां-कहां इसके एप्लीकेशंस हुए हैं, इसका कोर सेंट्रल पार्ट क्यों इसका एग्जिस्टेंस में आया है और कैसे इसको हम टेस्ट करते हैं. क्या ये सारा मिलकर के एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है? रीजनिंग, वेल रीजन. बताइए. Yes, sir. Yes, sir. मैं दूसरे शब्दों में ये कह रहा हूं कि जब भी आप कोई हेड नोट्स पढ़ें ऐसे ही कनेक्ट करें. अब मैं अगले पार्ट पे थोड़ा सा प्रोसीड करूं, which is the 3. 3 is the evolution of public interest litigation. ये कैसे कैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया में इवॉल्व हो उसके बारे में इन्होंने लिखा है. और रफली मैं जा रहा हूं.
And this is a very clear, and what I discussed earlier, 3.1, the development of public interest litigation has been extremely significant development in the history of Indian jurisprudence, and it can be broadly divided into 3 phases. Note करने वाली बात. What was the 3 phases? The decision of the Supreme Court in the first phase in the 70s. क्या किया था? Loosen the strict locus standi requirement to permit filing of petitions on behalf of marginalized. The word is on behalf of. On behalf of मतलब वकालतनामा नहीं है. On behalf of affidavit, petitioner. On behalf of marginalized and deprived section of society by public spirited individuals to whom deprived section of the society by public spirited individuals, institutions and or bodies. So who can file the PIL? Only individual, nahin? Even the institutions, even the bodies. Most of the public interest litigation cases which are entertained by the court are pertaining to enforcement of fundamental rights under Article 21 of the Constitution of India. So the first page was confined to Article 21 regarding marginalized and deprived section of society. The Supreme Court broadened the traditional rule of the standing, that is the locus standi, and the definition of personal aggrieved. So this aggrievedness part was mentioned in 3.1. So 3.1 पे क्या है सोच लीजिए. थर्ड सेक्शन में क्या डिस्कस किया गया. और इतने सारे केसेस का रेफरेंस दिया है जिसमें एमसी मेहता से लेकर के बचपन बचाओ, और बहुत सारे केसेस इसमें आपको वो भी मिलेगा जो आपके लीडिंग केसेस का हिस्सा है. आपको मैं शायद दिखा पाऊं. ओके, विल डिस्कस लेटर. एक लंबी लिस्ट है, ये देखिए. एक तो मुझे दिख गया, which is the DK Vasu, West Bengal. Another is Visakha. 2 केसेस आपके लीडिंग केसेस के यहाँ मिल गए, स्टेट ऑफ राजस्थान, and so forth. It was the first phase. 3.1 is talked about the first phase. This is talking about the second phase. Second phase of PIL, it was extended in 80s. It started sometimes in the 80s, and it relates to the court innovation and creativity where direction were given to protect ecology and environment, forest, marine life, wildlife, mountain, etc. So nature, with a special attention on the problem of air policy, water policy, environment degradation, क्योंकि वो चीज है जो कि entire society के लिए threat. Now, come to the another part. Third, this is the third page. The Supreme Court expanded again the ambit and the scope of the PIL further and passed a number of judgment, order and direction to unearth the corruption and maintain probity, transparency, integrity and morality in the governance of the state. That is called public policy. The probity in governance is a sine qua non for the effective system of administration and for the development of the country, and an important requirement for ensuring probity in governance
is the absence of corruption. The High Court also under Article 226 followed this. It was the third phase. मैं कोई भी नया टर्म क्वाइन नहीं करूंगा, मेरी नजरों में और मेरी समझ में थोड़ा एक दो फेज और एक्सटेंड किया है. आई विल नॉट एंटर इनटू दैट. मैं यहीं पे कन्फाइन रहूंगा. दिस वाज द 3.3. व्हाट इज द 3.4? The Indian court may have taken some inspiration of the group or classes interested litigations and so कहाँ से वो रूट हो रहा है. आगे इन्होंने ये भी बतलाया है कि ये पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रेस में देना नहीं चाहिए. 5. The development of PIL in India has had an impact on the judicial system of neighbor countries like Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and Pakistan and other countries. पूरी लिस्ट है, बहुत सारे पैराग्राफ्स मेंशन किए हुए हैं. You can find out in the judgment itself. It was the PIL. अब PIL का abuse कैसे होना शुरू? Unfortunately or late, it has been noticed that this is the fourth point. Notice that such an important jurisdiction, which has been carefully created and nurtured with a great care and caution by the court, is being bluntly abused by filing some petitions with opaque motive. So motive is a prime concern is there. दोनों में कॉमन पार्ट आप देख लीजिए, एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, राइट प्रोटेक्शन के लिए है, और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए. वो देखिए, टाइम हैज कम व्हेन genuine and bona fide public interest litigation must be encouraged, whereas frivolous public litigation, this is word is written there, the frivolous, should be discouraged. In considered opinion of the court that the important jurisdiction has to be protected and preserved in the larger interest of the people of the country, but for the purpose, effective steps has to be taken to prevent and cure its abuse on the basis of monetary and non-monetary direction by the court. The court should be careful that its jurisdiction is not abused by a person or a body of person or further his or their personal causes. The word is personal causes, or to satisfy his or their personal growth or grudges. The schemes of justice should not be allowed to be polluted by unscrupulous litigants. So this point is also most important part, कि किसको allow करना चाहिए और किसको allow नहीं करना चाहिए. This is negative part. It should not. And it was noted into this particular part और यहाँ से refer किया हुआ है. In the instant case, अब instant case में आते हैं. The practicing lawyer has made a serious attempt to demean an important constitutional office. The petitioner ought to have known that the controversy which has been raising in a petition stands concluded half a century ago by a constitutional bench of the court, and the controversy involved in this case has no longer res integra. A degree of precision and purity in the presentation in a sine qua non for a petitioner filed by in a manner of the bar under the level of PIL. It is, ये ध्यान दीजिए, it is expected from the member of the bar to at least care, at least carry out the basic research whether
the point raised by him is res integra or not. The lawyer who filed such a petition cannot plead ignorance. The petitioner ought to have refrained from filing such a frivolous petition. This case is a clear case of abuse of process of the court in the name of public interest litigation. The tendency has to be crabbed effectively. It is made it clear that the petitioners can ask the court to review its own judgment because of flaw and lacuna, but that should have been a bona fide presentations with listing of all relevant cases in a chronological order and a brief description of what judicial opinion has been or poignant and clear request why there should be reconsidered of the existing law. Unfortunately, the petitioner has not done this exercise. It may be pertinent to mention that despite the service of notice, the respondents who had initially filed the writ petition before the High Court challenging the appointment of the advocate did not appear before this court. This is clearly demonstrate that non-seriousness and non-commitment of the respondent filing the petition. On consideration of the totality of the fact and circumstances of the cases, the prosecution of the writ petition filed in the High Court are quashed. The respondent writ petition are directed to pay a cost of 1 lakh in the name of Registrar General of the High Court. Chief Justice of High Court would create a fund in the name of Uttarakhand High Court Lawyers Welfare Fund, if not already in existence. And finally issued the direction कि PIL को कैसे entertain करना चाहिए और frivolous PIL को कैसे decline करना चाहिए. And इसके बाद, इस direction के बाद, almost each and every High Court and Supreme Court में PIL का section create हुआ, special section for the PIL. Am I clear to this case? Yes, sir. Yes, sir. इस केस को पढ़ने में 1 घंटा लगा मुझे आपके सामने. अकेले में मैं पढ़ूं आधा घंटा लगेगा ज्यादा से. Now the question is, again I am coming back to the particular part which is the moral of all these things, which is the moral of the things, and that is called a structural analysis of Supreme Court rules for Supreme Court reporters. This is the SCR Headnotes. How the Headnotes is organized and arranged. This SCR Headnotes कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है? This is the section in 1, 2, 3, 4 and 5. Does this in logical sequence? लग रहा है आपको? The answer is yes, absolutely. और पहले प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुआ है, then अप्लाई हुआ है पर्टिकुलर केस पे, है ना? So we can say this is a well reasoned, optimally reasoned, considered the everything, positive part, negative part and complete part, and given the proper direction to the lawyer also और to the litigant also कि कैसे PIL आप फाइल कर सकते हैं. बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है कि ये नाम हो जाएगा, मेरा कंपनी फ्लोराइज कर जाएगा, इसको हम ऐसे बेच लेंगे, उसको ब्लैकमेल कर लेंगे. बहुत सारे अब्यूज है PIL. And we as a responsible lawyer could not promote all these things. और PIL के आर में अब्यूज को सबसे पहले आपको रियलाइज करके उसको चेक करना होगा. That is our duty. Not only for the constitution, not only as an advocate on record, also for the society. आप देख लीजिए आर्टिकल 51A entirely elaborate किया हुआ है regarding the due process. Not interesting by law. But हम सबको उसको जरूर देखते हैं. आर के पांडे जी माइक म्यूट कर लें प्लीज. संपा सेन जी.
सो कुल मिलाकर के मैं समराइज इसको इस सेंस में करना चाहता हूं कि हर पॉइंट की एक लॉजिकल इंटीग्रिटी है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वन पॉइंट पे पहले ओपनिंग पार्ट पे ये दिखाया गया था कि कैसे पोजीशन करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट ये था which is the most important part था, which was defined regarding PIL के definitions हैं और एलिब्रेशन से प्रॉपरली कि किस किस कंडीशंस में उसको एलिब्रेट किया गया है, और वो व्हिच इज समरी नोटेड इनटू द जजमेंट थ्रू ऑल द जजमेंट टेकन अर्लियर। बहुत सारे जजमेंट के रेफरेंस थे, उसको रेफर करते हुए ये कंक्लूजन निकाला गया। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट पर ये दिया गया कि कैसे पीआईएल इवॉल्व हुआ है, व्हाट वाज द स्पिरिट। एंड फोर्थ पॉइंट पे अब्यूज डिस्कस किया हुआ कि उस स्पिरिट के अगेंस्ट मैलाफाइंड इंटेंशन कैसे प्ले करने लगा। एंड फाइनली द डायरेक्शन वाज कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे हमको इन सारी चीजों से बचना चाहिए। इन सारे चीजों को वापस यदि मैं हेड नोट्स और समरी पे देखूं और अब इस तरह से यदि मैं समराइज कर लूं और यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो व्हाट वाज द फेजेस ऑफ द पीआईएल, लोकलाइजेशन, इवन ये लोकस लिबरलाइजेशन कहां से शुरू हुआ और कैसे। तो certainly we will enter into the third phase evolution वाले पार्ट, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट गोइंग आइदर एंड अदर। वहां से पिकअप करना है, यदि मैं साल भूल गया, एरा भूल गया, एज भूल गया, तो वो भी वहां से मैं देख लूंगा, पूरा हिंट पिकअप कर लूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right. Yes, sir. Can we use this head notes into the examination? We are ready for that. Yes. No, you are not ready. Unless until you will not organize in your mind कौन सा पॉइंट कहाँ है, उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ना है और ब्रेन में समझना है कि कहां पर क्या है। एप्लीकेशन ऑफ योर ब्रेन फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फॉर द पर्पस ऑफ फील द रिदम, जिस लॉजिकल इंटीग्रिटी में वो जजमेंट के हेड नोट्स हैं। और ऑप्टिमली ऐसा नहीं मैंने 4 पॉइंट पिकअप किए, 5 पॉइंट, सिर्फ मैं 5 पॉइंट के हेड को ब्रेन में रखूंगा और हर पॉइंट पे जैसे 1 में 1.1 टू 1.3 है, 2 पे 2.1 टू 2.4 है, 3 पे 3.1 टू 3.5 है, 4 पे 4.1 टू 4.6 है। इसमें भी एक लॉजिकल रिदम है। 4.1 इज ओपनिंग एंड 4.6 इज द कंक्लूजन। 1.1 is the opening, 1.3 is conclusion, 2.1 is the opening, 2.4 is the conclusion, 3.1 is the opening and 3.5 is the conclusion. This is the standard logical reasoning everywhere in practice. Am I right or wrong? Yes, sir. हमको ये क्लू मिल जाए किस पॉइंट में किससे रिलेटेड पॉइंट है, सिर्फ इतना क्लू हम अपने ब्रेन में सेट कर लें, पूरा एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 1-2 बार लिख लें मेन पार्ट को। जैसे मैंने कहा 2.1 आपको लिख लेना चाहिए, तो डेफिनेशन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 2.1 जाना है, वहां से पिकअप करना है। डेफिनेशन पे आप क्या चेंज करेंगे, आप जिस जजमेंट में वो डेफिनेशन लिया गया है, वो यदि जजमेंट का साइटेशन आप भूल गए तो क्या वो साइटेशन यहाँ से नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिखनी चाहिए? अब क्यों उसको याद रखना चाहिए? That's what the use of SCR। मैं थोड़ा और पीछे चलता हूं, आपको वो फर्स्ट पेज पे मैं चलूंगा और वो फर्स्ट पेज यहाँ है। अब आइए, which is already summarized। Appointment of Advocate General of the for a state challenged by way of writ petition before the High Court on ground that incumbent before his appointment to the post crossed 62 years of age held the issue having been settled half a century ago by a judgment of the Constitution Bench of Supreme Court, and the positions having been reiterated in several decisions of the High Court and Supreme Court thereafter, filing a writ petition by practicing advocate on an issue which is no longer res integra. It is clear abuse of process of the court for extraneous consideration. This tendency has to be curbed effectively
exemplary cost imposed on writ petitioners, significance of and evolution of PIL explained in order to preserve purity and sanctity of the PIL guidelines laid down, constitutions of India under article, same article is repeated, practice and procedure. Now next part is there, this is a word, यहाँ देखिए नीचे, expression PIL defined. क्लू में ही आपको दिया हुआ है डिफाइन, कहां पे डिफाइन? सो 2.1 व्हाट द प्रेसिडेंट जो आगे लॉ बनेगा, दिस प्रेसिडेंट इज लेट डाउन हियर व्हेन एन इशू इज नो लॉन्गर res judicata, filing of indiscriminate petition raising the controversy repetitively creates unnecessary strain on judicial system and leads to inordinate delay in disposal of genuine and bona fide cases. It is a bounded duty. It is a bounded duty of the court to ensure that controversy once settled by one authoritative pronouncement should not be reopened unless there are extraordinary reasons for doing so. Though a petitioner can ask the court to review its own judgment, but that should be in a bona fide representations with listing of all relevant cases in a chronological order and a brief description of what the judicial opinion has been and why there should be reconsidered of the existing one. समझ में आ गया? याद रखिएगा, ये जजमेंट आपके लीडिंग केस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस पे आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए. इसके हेड नोट्स आपको नहीं मिलेंगे. नाउ देन आपको क्या हेड नोट्स मिलेंगे? यदि मैं ये कहूं आपको कि सिर्फ मैं अब हेड नोट्स पढ़ूंगा बाकी केसेस के, और आपके लिए छोड़ूंगा कि डू योर ओन, डेवलप योर ओन, क्या वो सही रहेगा? Yes. Yes, sir. That was expected. So let us read to the another judgment on that same line, और वहां थोड़ा और ऊपर चलूं और सीधा सीधा मैं विशाखा पे आता हूं. This is the head notes for the विशाखा. एक दो चीज और नोटिस करने वाली बात है, वो यहाँ पर है, जो आपको यहाँ से मिल जाएगा. This is the cause title, date of judgment, and this is bench, 3 judges bench. इस हेड नोट्स को मैं बाद में पढ़ूंगा, उसके पहले मैं इसके फैक्ट्स को. फैक्ट दिस, द प्रेजेंट पिटिशन वाज फाइल्ड फॉर द enforcement of fundamental right of working women under Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India. It was brought as a class action by a certain social activist, यहाँ देखिए, a class of social activists and NGO. This is a petitioner जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जिसने केस लाया, with the aim of focusing attention towards societal aberration and assisting in finding suitable methods for realization of the true concept of gender equality, to prevent sexual harassment of working women in all workplace through judicial process, and to fill the vacuum in the litigation. The immediate cause for the filing of present petition was an incident of alleged brutal gang rape of social worker in the village of Rajasthan. So issues is very larger, but this is invoked because of instant event happened in Rajasthan. So disposing this writ petition and formulating guidelines and norms in exercise of the Article 32
कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया है। और थोड़ा और मैं इस पे इलैबोरेट करूं, दिस इज द हेड 1 या 1 and 1.2 नहीं है। Each incidence of sexual harassment of working women results in violation of fundamental right of gender equality and the right to life and liberty. It is declared by the first line itself. It is a clear violation of rights under Article 14, 15 and 21 of the Constitution. So this is established. Undoubtedly it is accepted. One of the logical consequences of such incidents is also the violation of victims' fundamental right under Article 19(1)(g). Right, gender equality, right to life and liberty, 14, 15 and 21 वो अपने जगह पर, माने काम भी आप करने नहीं दोगे उनको। या तो आप काम करने नहीं दो, या करने दो तो वहां एक्सप्लॉइट करो। This was the serious event. The central part is the Article 19(1)(g). Read with gender equality and right to life and liberty, and this 14, 15 and 21. In the absence of the most important part of what the Visakha was concerned to this too. In the absence of domestic law यहाँ नहीं था in this regard, occupying the field to formulate effective measures to check and avail the sexual harassment of working women of at all working places. The content and there was the absence of domestic law, and there was the international convention and norms. In India was the signatory, और उन्होंने क्लियरली ये साइन किया हुआ था कि हम ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन कोई लॉ नहीं बना था लगभग 10 से 20 साल तक साइन होने के बाद। दिस इज द इम्पैक्ट फ्रॉम आर्टिकल 15, 51C and the unveiling power of the parliament to enact law for implementing the international convention and norms by virtue of Article 253. Read with entry this. The main part of this judgment यही है। इंडिया, मैं रफली मैं ये बतला दूं, Parliament is empowered to make a law under Article 53. Read with entry 14 of the Union List 7th schedule. सिग्नेटरी भी है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्पावर, और गवर्नमेंट ने एक लंबे समय तक, डेकेड्स तक ये लॉ नहीं बनाया आफ्टर डूइंग इट। और इस तरीके के इंस्टेंस की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती गई। इस पीआईएल के थ्रू ये डायरेक्शन लेट डाउन किया गया टिल द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और उस डायरेक्शन के 20 साल बाद फिर लॉ बना। इट इज द स्टोरी। आप देखिए, इसको पढ़िए, 32 का कैसे यूज हुआ, किस तरीके से, किस लाइन एंड लेंथ पे, किस रीजन के साथ कोर्ट को ये डायरेक्शन देगा। बस 6 पैराग्राफ में कंक्लूडेड है एंड फाइनली डन। और इसके समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए। Power of Parliament to enact law, absence of domestic law occupying the field, value and significance of the international convention and norms held. The international convention and norms are of great significance and Parliament has to power to enact the law for implementing the same. बस यही 3 पैराग्राफ। थोड़ा और ऊपर चलें तो बड़े छोटे छोटे सीएमसी बिल और शक्ति वाहिनी, डीके बासु को आप जरूर पढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सारे केसेस हैं।
मैं ये चाहता हूं कि सारा हेड नोट्स जो हमने एक पढ़ने का तरीका अभी देखा, सीखा, समझा, वो आप लोग अडॉप्ट करें और इस पे इम्प्लीमेंट करें। सर जो हमें हेड नोट्स वहाँ पे क्वेश्चन में वो प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें जजेस के नेम भी होंगे उसमें लिखे हुए? हाँ, देखिए आपको जो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, मैं आपको पूरी तरीके से बता दूं। जैसे विशाखा जजमेंट की बात करूं तो विशाखा जजमेंट में ये ऊपर से शुरू होगा यहाँ से, और ये पार करता हुआ ये वाला पेज भी आएगा, ये वाला पेज भी आएगा, और यहाँ तक आएगा। यहाँ तक, यहाँ जो पार्ट है ना, ये क्रिमिनल अपील एंड इस पार्ट तक आपको दिया जाएगा, यहाँ तक। मतलब विद इसके नेम नीचे ऑफ हटा द दिया जाएगा। जजमेंट और जजेस के नेम और हाँ, SCR की साइटेशन भी होगी? everything would be whatever it available. They will not edit now. Whatever is there, they will produce to you. ओके ओके। वो एडिट नहीं करेंगे ना, जहां पर है वो रहता है आपके पास। क्यों एडिट करें, उतना टाइम क्यों लगाया नेसेसरली? तो मतलब ये सब हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ना है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इज। जैसे सीएमसी वेलोर की बात करें, देन सीएमसी वेलोर पे दिस इज द हेड नोट्स, स्टार्टेड फ्रॉम दिस पेज, कम टू द अनदर पार्ट। ये आपको आएगा, ये सारा कुछ रहेगा, उसका हिस्सा रहेगा। ये पार्ट करें, ये देखिए पॉइंट 1.1 1.23 यहाँ पे भी है, 2.1 2.2 भी है, 3.1 एंड सो एंड सो फोर्थ भी है, और यहाँ तक रहेगा। आपको यहाँ से ओरिजिनल जुरिडिक्शन शुरू होता है ना, तो दिस मच इज रिक्वायर्ड। यहाँ से नीचे शायद हटा देंगे, बट अप टिल हियर हर हालत में होंगे। और ऐसे ही सर डीके वासु की जो 11 गाइडलाइंस हैं वो भी सब हमें प्रोवाइड ही होंगी फिर हेड नोट्स में? ऑब्वियसली इसके ऊपर में ही है वो सारा कुछ। आप जरा देख लीजिए, वो सारे गाइडलाइंस इसमें ही नोट डाउन। आप पढ़िए, फाइंड आउट कीजिए ना, आपको सब कुछ क्या दिखेगा। हाँ सर, आपने कल कहा था तो वो मैंने पढ़ा था, डीके वासु से ही शुरू किया था, तो उसमें देखा ये तो पूरे गाइडलाइंस पूरा कुछ ही दिया हुआ है उसमें, तो ये तो प्रोवाइड नाउ हम हाँ, वही नाउ मैं 2 मिनट एक चीज पे और एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने हैंडबुक जो रिलीज किया था, इस हैंडबुक के लास्ट में 2 पेज पीआईएल से रिलेटेड। बलवंत सिंह चौफल का रिजल्ट ये है कि हर जगह पर वो बना पड़ा हुआ है, और ये गाइडलाइंस हमारे हैंडबुक पे मेंशन है। एट पेज नंबर आप देख सकते हैं एज एन एनेक्सर 1। एक्चुअली हमको बलवंत सिंह चौफल को ठीक से पढ़ना चाहिए। आई थिंक देन एवरीथिंग विल बी चलिए, नहीं, दिमाग में रहे। चौफल की बात नहीं, मैं एक बात और मैं कहना नहीं, उसमें तो बिल्कुल तरीका बताया है ना, देन वी कैन अंडरस्टैंड। आप जरा ये समझिए, मैंने बलवंत सिंह चौफल को देखा, और जो कि 2010 का जजमेंट है। कैन यू जस्ट अप्रिशिएट दिस पार्ट ऑफ बलवंत सिंह चौफल का। इसके जो जजमेंट के लिखने का तरीका है और जो ऑर्गेनाइज है, वो अपने आप में इनलाइटन करने वाला है। एक पूरी हिस्ट्री को एक साथ रखता है, प्रॉस को रखता है, कॉन्स को रखता है, एंड देन फाइनली कंक्लूजन लैंड अप। यानी ये जजमेंट पढ़ने के बाद इसके पीछे के बहुत सारी चीज ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ओम है प्रकाश ना, जी, कई ओम प्रकाश पेजेस जी एस्टेब्लिश म्यूट हो कर लें। जाएंगे। ओम प्रकाश जी म्यूट कर लें प्लीज। दिस जजमेंट इज रिटन बाय मिस्टर जस्टिस दलवीर भंडारी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अभी जज ऑन इंडिया। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। यदि आप अभी के जजेस के जजमेंट को आप देखें, तो कौन ऐसे जज हैं जो अपने सारे जजमेंट इसी ऑर्डर में लिखते हैं, इस तरह से पूरे बैकग्राउंड को ला करके सामने रख करके एनालाइज करके प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्टिंग्विश करते हुए और अल्टीमेटली कंक्लूजन पे लैंड अप करते हैं? Does this not the well structured, well reasoned standard of writing judgment? And you will find out, मैं एक ही नाम लूंगा जो मैं बार बार लेता हूं, इट इज आर सीजीआई। उन्होंने हेड में ब्रेक कर रखा है। हालांकि ये काम हमने किया है और हमने आप सबों को दिखाया है कि जहां नहीं हो वहां से आप इसको ब्रेक कीजिए। उन्होंने हेड वाइज दे रखा है, इंडेक्स प्रॉपर्ली रिलीज करते हैं। इस हेड में ये पार्ट है, इस सब हेड में ये पार्ट। थोड़ी लंबी जजमेंट जरूर होती है, बट ये होती बड़ी कंप्लीट है, कनेक्टिव होती है। आप थोड़ा टाइम देंगे ना, पूरे एकदम अंदर तक दिल को टच करेगा ये जजमेंट। और वो जो
जस्टिस कैसे इंश्योर होता है ना, वो आपको दिखेगा एक फ्लो में, अपने आप चलता हुआ दिखेगा, नेचुरल फ्लो। इसका साइटेशन भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपसे अब ये रिक्वेस्ट है कि डोंट एक्सपेक्ट कि एवरीवन विल राइट लाइक दिस, क्योंकि ये हेड नोट्स को आपको दे दिया गया, समराइज कर दिया गया, एक रॉ जजमेंट आपको दे दिया जाए, डू यू एबल टू फाइंड आउट योर ओन पॉइंट और डू यू डेवलप दिस हेड नोट्स? Yes. मुझे लगता है कि हम सबको कोशिश जरूर करनी चाहिए, सो दैट कि एग्जैक्ट पॉइंट हमारे सामने आए कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैसेज मेरा बस इतना है कि एग्जाम अपने जगह पर है और पूरी प्रोफेशनल लाइफ अपने जगह पर है, योर ओन इनर कोर सेटिस्फेक्शन आपके अपने जगह पर। सो हमने सिर्फ एससीआर हेड नोट्स को आपको नहीं दिखाया है, एससीआर हेड नोट्स को एनालाइज किया है और बहुत सारे इसके पैटर्न चेंज होते गए हैं। अभी जो है ना, आप रिसेंट 5-7 साल का जजमेंट देखें तो पैटर्न डिफरेंट है, यानी वहां सिर्फ इटैलिक पार्ट है और कुछ आपको दिखेगा, लेकिन उसके अंदर ही ये तीनों पार्ट ये मिले हुए हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। और फिर अब जो रिसेंट जजमेंट आने लगे हैं पिछले 2 सालों से, आप देखेंगे तो इनका पैटर्न थोड़ा बदल गया है। ये इश्यूज को सबसे पहले हाईलाइट करते हैं और पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जो भी फाइंडिंग है वो वहां पर डालते हैं। बट एनीवे जजमेंट वही है। ये पैटर्न मुझे बहुत प्यारा लगता है, सो मैं कोशिश यही करता हूँ कि इसी पैटर्न में अपने ब्रेन को ऑर्गेनाइज करूँ यदि मैं किसी जजमेंट को पढ़ूँ तो। और इन रॉ, ये नहीं है कि हम मुझे ये सिर्फ हाईलाइटेड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या हेड नोट्स ही चाहिए। हमारे लिए जजमेंट आ गया वो सफिशिएंट। और आज के डेट में एक और नई चीजें आ गई है और बहुत शानदार चीजें हैं, वो है न्यूट्रल साइटेशन। जिस दिन जजमेंट आता है उसी दिन उसका रेफरेंस नंबर उसके ऊपर जनरेट हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिपोर्टेबल और अनरिपोर्टेबल। उसके रेफरेंस जनरेट हो गए तो उसको तो रेफर कहीं भी रेफर करने के लिए तो वो पार्ट आ गया ना। चल प्लीज बताइए यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। यस सर। So no judgment would be lost now. Either it may be reported or not reported by private parties. और even the Supreme Court भी नहीं, लेकिन आपके एक्सेस में तो है। This is the beauty of putting the one word mark, मतलब certain character उसके ऊपर put करके आप न्यूट्रल साइटेशन दे देते हैं और उस साइटेशन से उसको कहीं से भी सर्च कर लेते हैं, किसी भी जर्नल्स पे जाएगा, and it's unique for each judgment, isn't it? यस सर। तो ये पार्ट है। अभी मैं ये कह सकता हूँ, अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बलवंत सिंह चौफल का और विशाखा का, जो कि पार्टली था, आप थोड़ा सा रिगरस टाइम दें तो आपको एक आदत डेवलप हो जाएगा। आपके ब्रेन में क्या होना चाहिए कि किस पॉइंट पे क्या अरेंज है, ये आपको एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे वो लॉजिकली कनेक्टेड है, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, डेफिनेशन वाला पार्ट कौन सा है, लिमिटेशन वाला पार्ट कौन सा है, ताकि जरूरत पड़ने पे उस पॉइंट को आइदर आप पिकअप करें या समटाइम्स मे बी पॉसिबल तो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं एज पर योर ओन स्टाइल एंड कन्वीनियंस। आप वो पिकअप कर सकते हैं। अननेसेसरी पार्ट पिकअप करने के बजाय आप एक कोर पार्ट को पिकअप करके वहां रिप्रोड्यूस और उसको एनहांस कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट द यूज ऑफ हेड नोट्स। मतलब इन कंक्लूजन आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ है और किस टॉपिक पे। यदि मैं इसी चीज को नहीं पढ़ा होता, नहीं समझा होता, तो हाउ कैन आई डेवलप दिस विशाखा एज जेल आर्टिकल 14, 19, 21 and all these things? Do we need to remember this citation? Do we need to remember this citation? Do we need to remember this thing? इस डेट को जजमेंट आया, यहां ये हुआ, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। इतना सारा वर्डन आपके ब्रेन से हट गया है
वो साइटेशन आपके सामने होगा, यू कैन पिक अप ऑल द थिंग्स जो आप याद करते, याद रहता नहीं रहता और उस पे लगे रहते, उसको कीप साइड, आप उस पर ध्यान ही मत दीजिए, आप ध्यान इन चीजों पे दीजिए कि पॉइंट क्या है, समझना क्या है, उसको जरूर ब्रेन में रखिए, उसको जरूर ब्रेन में रिपीट एंड रिपीट करके उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश, क्योंकि वो आपका अपना है। जजमेंट तो गया, लेकिन जो लॉ है, रेशियो है, वो आपके साथ है और हमेशा आप उसको यूज करें। Am I right or wrong? यस सर। Yes, sir. Right, sir. तो Yes, sir. इसी पॉइंट पे मैं आज के मीटिंग को यहीं पे रिजॉल्व करता हूँ विथ ह्यूज असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड होपफुली विल सेट ऑन सैटरडे अगेन. Saturday is 25th, I guess, and thereafter we'll try to continue every day till completion of all this. But before going into them, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और बहुत ज्यादा परेशानी लिए बगैर, ब्रेन में बिना किसी टेंशन को लिए बगैर, इस तरह से जैसे मैंने पूरे PIL का भी एक हेड नोट्स का कंपाइलेशन आपको दिया, I will prepare and release for the criminal also. I'll also release for the arbitration, constitutional, land acquisition. इन सारे चीज का मैं अलग अलग कर दूंगा हेड नोट्स, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, या आप कहें तो इन सब में 4-5 का एक क्लब अप कर लेते हैं, कॉमर्शियल, IPL वगैरह टाइप गवर्नमेंट वाला, एंड देन आई विल शेयर विथ यू, सो दैट कि आप उस पर्टिकुलर पार्ट के हेड नोट सब में आप देखिए। ब्यूटी ये है कि कुछ बड़े जजेस हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ छोटे, 3 जजेस जजमेंट, यानी 3 जजेस जजमेंट और 2 जजेस जजमेंट में माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी व्यूज की संभावना ही नहीं। और निश्चित रूप से जब हम 8-9 जजमेंट, यानी मुझे लगता है 5 जजमेंट भी यदि आप पढ़ ले ढंग से, तो आपको हेड नोट समझने का तरीका आ जाएगा, और जैसे ही ये चीज आपके पास आ गया, देन यू विल बी एबल टू even explore the things only reading by this italic part, including this particular fact of it. मैंने जितने भी हेड नोट्स अभी 63 केसेस के जो रिलीज किए हुए, जो सब जगह घूम रहा है, उसमें ये वाला पेज सर्टेनली है अप टू, यानी इस जजमेंट का देखें तो 2 पेज, यदि मैं दूसरे जजमेंट पे जाऊं, ये विशाखा, तो उसमें मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक पेज पिकअप किया है विशाखा का, क्योंकि यहाँ फैक्ट है और ऊपर उसके सारे समरी हैं। यदि मैं CMC वेलोर की बात करूं, तो इसका ये इटैलिक पार्ट है और ये फैक्ट है, फैक्ट विच इज कंटिन्यू फर्दर, तो यहाँ तक हमने पिकअप कर लिया। सो द पॉइंट इज दिस, द मोस्ट शॉर्टेस्ट पार्ट आपके लिए इस पूरे ह्यूज जजमेंट से जो पॉसिबल था वो मैंने किया, और वो टेक्निक्स समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप उसको रीड करेंगे, रिजॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड, और समय पड़ने पर यदि उसको एनहांस करना है तो कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, 3.1, 1.1 एंड 5, यही 3 चीज एग्जाम में पूछे जाए, कोई भी सेट वहां से पिकअप किया जा सकता है ना। इफ यू आर फुल्ली प्रिपेयर ऑन दिस टाइप, तो किसी भी तरीके से कोई भी पॉइंट पिकअप किया जाए, उसी पॉइंट का आंसर आप देकर के आएंगे। Am I right or wrong? Yes, sir. यस सर। तो क्या ये 64 केसेस जो कि मोर देन 2000 पेजेस पे हैं कंपाइल्ड, ओनली हेड नोट्स, उतना ज्यादा अभी इस मोमेंट में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, उस ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने कल डिस्कस किया था 3 स्ट्रैटेजी, प्लान A, प्लान B, प्लान C।
और आज हमने देखा है कि प्लान ए को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इसमें प्लान बी भी है, जिसमें आप पूरा करेंगे उसका आप हेड नोट्स तो ऑटोमेटिकली है, अदरवाइज कुछ का सिर्फ हेड नोट करके आप समझेंगे, बट केस की समझ तो प्रॉपर हो जाएगी। आप लॉस्ट, यू विल नॉट फील द लॉस्ट, हेल्पलेस, और पूरी तरीके से एकदम अब सब कुछ खत्म हो गया टाइप से नहीं, और जो भी करेंगे ढंग से करेंगे। डू सम एक्सरसाइज, एंड आई गेस दिस पेपर इज सबसे आसान तो नहीं कह सकते, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। आपको याद रखने की सबसे बड़ा सरदर्द होता है ना याद रखने का, और मुझे उससे मुक्ति मिलती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं समझना हो समझिए, ब्रेन में ऑर्गेनाइज कीजिए, मतलब और सब चीज करने के लिए स्कोप बच जाता है, टाइम मिल जाता गुड मॉर्निंग सर। है। लेट अस ओपन फॉर द क्वेश्चंस। सर ये आपका हेड नोट्स में जो डीके वासु वर्सेस वेस्ट बंगाल है, उसमें DOJL है, इसका क्या फुल फॉर्म क्या है सर? ये डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल लिबरेशन। नहीं सर, DOJL। यस सर। जुडिशियल लीगल सर्विस में थे सर। नहीं, मैंने किस लिए लिखा है आई डोंट नो, आई कैन रिमेंबर राइट विशाखा नाउ। वर्सेस राजस्थान में, विशाखा वर्सेस राजस्थान में JAL है। व्हाट इज दैट फुल फॉर्म? जुडिशियल ओ जुडिशियल, sorry जुडिशियल एक्टिविज्म। it is concerned to the judicial activism. See, law making is not the part of judiciary. Legislation is not the part of judiciary, but the direction was concerned with the nature of legislation. यस सर। It was the limited period. So, judicial activism. and DK वासु वर्सेस वेस्ट बंगाल में DOJL, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल लिबरेशन। DOJ, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बतलाऊंगा, मैं वो पूरा पहले पेज पे वो कोड किया हुआ है। यस सर। There are lot of pages. In the first page it was coded. शायद वो मैंने दूसरे डॉक्यूमेंट में, next day we will just share with you. श्योर सर, थैंक यू सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन ऑन अ ड्राफ्टिंग सर? हाँ sure, हाँ exactly, please. Sir, while doing the practice, I found one question. Draft an affidavit in support of a notice of motion seeking condonation of delay 300 days in filing an appeal against a judgment of the High Court dismissing a criminal appeal convicting the appellant under section 302 of the Indian Penal Code. See sir, here what I analyze, draft an affidavit means affidavit we have to draft in support of notice of motion, means whether we have to write the notice of motion also seeking condonation of delay. In this affidavit, one application is required. That application is the notice of motion, or which is for the purpose of condonation of delay in filing or refiling, whatever it may be. So all the reasons for why it is the delay, justification for the delay, and for the cause, you need to mention into that particular application. Sir, in short, is it a application of condonation of delay? Exactly. Along with affidavit? Along with affidavit. Okay, thank you sir. I was confused with this word, a notice of motion. No, notice of motion is a particular word which is written into the Supreme Court rules dedicated to a particular order. Just read it. It is the very important part. There Sir, are lot of, just I am telling you, there are lot of application. Whatever application and petition would be, you need to write a prayer. Yes. So, who has the jurisdiction to allow that prayer? Sometimes it is the registrar. Yes. Sometimes it is chamber judge. Sometimes it is revision bench. Yes. So those applications which is required to be considered by a court, right, is called notice of motion. See, stay application, judicial mind application is required on that.
it is done by the court only. Bail, done by the court only. Okay. Condonation of delay, done by the court only. Right. But exemption from filing OT, it is done by registrar itself. Okay. So that is not Right. the notice of motion. Bringing on record the legal hairs, that is also done by court. Notice of motion, exactly. Okay. Okay. Thank you, sir. That was I was confused with this word notice of motion. No, That it's whether very proper specific legal words, notice of motion. so No, because no, in no. sir, just a minute. By Like, the way of notice of motion, we are inviting the attention court's intention and other party also, क्योंकि इसकी सर्विस दूसरे पार्टी को देनी होती है और कोर्ट के सामने वो मैटर लगता है and for that purpose there is an argument and finally it is allowed or not allowed or disposal or adjournment, whatever it may be, it is the discretion of the court and it happens. So short question, like number 4, the form number 4, it is in our SCR rules. That is notice of motion, SCR order 11 rule 2. Exactly. That's what I am referring. You need to So read it. do we have to write that only, or that we have to find the application also? See, that particular reference is not required, but as per condonation of delay application is required and supported with the affidavit. Okay. Okay. Any application, whatever is contained into that application, it is authenticated by the affidavit. Just similar to whatever we are writing into the answer, in bracket we are referring to certain reference. This is the article, this or rule, this or regulation. Yes, What yes. is this? This is the another way of affidavit into the Yes. answer sheet. Yes, sir. Yes. So we are authenticating now. Okay, this is coming from this place. Okay. 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 Thank you, sir. वेलकम मैम। जिंदो मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप लोग अनम्यूट कीजिए, अच्छा लगेगा। कि when we start writing, एक मिनट, यहाँ मैं आपको कह रही हूँ कि अगर मतलब सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए, so we will start with first the application for condonation of delay to मैम आपकी आवाज बिल्कुल ही ढंग से नहीं आ रही, मैं नहीं समझ पाया। affidavit, right? Then we will just one through that we will write the notice of motion. The registrar को address application किसी भी SFP या किसी भी ऊपर पे। Ma'am, your voice is not clear. Indu ma'am, Notice of sorry motion to interrupt you. Your voice is not clear. Oh, sorry. मैं ये कह रही, am I okay? Yes. I believe signal issue है आज। I think. मुझे लगता है आज के मीटिंग के बाद, आज के डिस्कशन इंटरेक्शन मीटिंग के बाद हेड नोट्स की जो एनालिसिस और स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट एंड लॉजिकल इंटीग्रिटी जो हमने आज देखी है, इसके बाद आप लोगों को जजमेंट पढ़ने में परेशानी नहीं होनी चाहिए और समझने में। Yes, sir. Am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. इतना बड़ा जजमेंट है, सारे जजमेंट का यदि हेड नोट्स को हम फोकस करें, देन वी आर एबल टू लोकेट। मतलब बहुत बड़ा टेरराइज होने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा जजमेंट है, इतने बड़े ये हैं। Yes, sir. और मेरे क्वेश्चन हेड नोट्स का जो रिदम एंड ऑर्डर जो पढ़ने का है, पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, ये सारा बहुत तरीके से यदि आपके ब्रेन में सेट रहेगा ना, then you are very much comfortable with this leading cases. ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन था, मैं वो कंटिन्यू करूं? Not only this part, even in the entire career of life, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप लीडिंग केस आराम से पढ़ें। मैं क्वेश्चन ड्राफ्टिंग का कंप्लीट कर दूं? प्लीज।
मैं वो कह रही थी कि सपोज हमने वो एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले लिख दिया, साथ में एफिडेविट लगा दिया, सो आर वी सपोज टू राइट नोटिस ऑफ मोशन आल्सो पहले, उससे पहले? नहीं, ये वर्ड लिखने की क्या जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड। नहीं एक बाय डिफॉल्ट इनहेरेंट, माने जहां कहीं भी रेसिडिकेट है वर्ड लिखना थोड़ी जरूरी है, रेसिडिकेट है वर्ड लिखना थोड़ी जरूरी है। उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये इशू अनएड्रेस्ड है, मतलब रेसिडिकेट है। नहीं, उसमें टू द रजिस्ट्रार लिखना पड़ेगा नोटिस ऑफ, जैसे बाकी उसमें पिटीशन में हम देते हैं किसी में नोटिस नहीं, ऑफ टू द, आप टू द रजिस्ट्रार तो कभी लिखते ही नहीं है, अच्छा कभी नहीं लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो भी, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड, ये तो हमेशा जो भी एप्लीकेशन आप जाएगा, किसी स्पेसिफिक रजिस्ट्रार के नाम से कोई एप्लीकेशन यहाँ नहीं जाता, ओके सीधा सीधा टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्री को यदि भेजनी है, यदि रजिस्ट्री को आप भेज रहे हैं, और नहीं यदि कोर्ट को मैंने कोई एप्लीकेशन एड्रेस कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन इज यूजुअली गोइंग टू द कोर्ट ओनली। सीजीएल, ओके उन्होंने इनहेरिट कर रखा है ना वो पावर, अल्टीमेट पावर इज टू द कंसर्न कोर्ट जहाँ पे हमारी पिटीशन पड़ी है, और सीजीआई सीधा सीजीआई को जाते हैं। कंसर्न कोर्ट क्या होता है? लाइक कोर्ट में कोर्ट वाइड डिस्ट्रिक्ट। सी मैम, यहाँ डिवाइड एंड रूल इज नॉट अलाउड। नहीं यहाँ लिखाता है टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारी मेरा क्वेश्चन है, हमने कोई पिटीशन डाल दी है, एसएलपी डाला है या कोई भी एप्लीकेशन डाली है, तो देयर आफ्टर आई केम टू नो अरे मेरा तो ये रह गया, कंडोनेशन डिले का एप्लीकेशन रह गया, सो हु टू एड्रेस इट, लाइक वो आ गया, लिस्ट हो गया, एंड और कहीं कोर्ट पे पड़ा हुआ कोई एप्लीकेशन, हमने कोई मिसलिनियस एप्लीकेशन, नॉट कंडोनेशन ऑफ डिले, एनी मिसलिनियस एप्लीकेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डालने या कुछ डालने, दैट इज टू गो टू द कंसर्न कोर्ट जहाँ पे हमारी पिटीशन पड़ी है, और टू सीजीआई। दैट इज माय क्वेश्चन। नहीं, कहाँ जाएगा ये अलग क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे ये अलग क्वेश्चन। मे आई आंसर दिस सर? लिखेंगे ओनली। मेरा कहने का मतलब है, सपोज मेरे को कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर एप्लीकेशन में डालना है या कोई भी फैक्ट्स मैं समझ गया, एक एप्लीकेशन आप मूव करेंगे, मान लीजिए कि वो कोर्ट में लगा हुआ है आपका यहाँ पर, दिस इज जस्टिस बेला त्रिवेदी सपोज, ठीक है तो आप क्या लिखेंगे? टू द बेला त्रिवेदी कोर्ट? नहीं नो, अच्छा क्या लिखेंगे? टू द सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, या कोर्ट नंबर 12 लिखेंगे, या 14 लिखेंगे? ओके, या आप लिखेंगे टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपेनियन जजेस? ओके, सिंपल। देन व्हाट इज द कंफ्यूजन? थैंक यू नो कंफ्यूजन सर मेरे हिसाब से उनका और यदि कंफ्यूजन, रजिस्ट्रार कोर्ट में कोई एप्लीकेशन जाना ले तो लिखेंगे टू द रजिस्ट्रार? नो, ये डिवाइड इन रूल जो है ना गलत है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी यदि कोई मैटर जाता है, वहां मैंने देखा है इन प्रैक्टिस, इन द बिफोर द कोर्ट ऑफ सच एन रानी एंड अलग मैंने बाय नेम दे आर राइटिंग। हाँ यस, आप उस इंडिविजुअल, यदि वो आदमी रिटायर कर जाए तो वो मैटर इनफ्लक्स हो जाएगा। आप उस नाम को एड्रेस नहीं करते, आप उस कोर्ट को एड्रेस करते हैं। आप कहिए मैट्रिमोनियल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर आपको कहिए फैमिली कोर्ट, आप कोर्ट को एड्रेस कीजिए ना। राइट We should not address to the individual who is sitting on the post, क्योंकि हम मान लीजिए उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके साथ उसका जिसके नाम से वो फाइल पे चला जाना चाहिए उसके साथ। एग्जैक्टली सर टू द फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज का नाम भी तो लिखती हूँ सर। क्यों लिखते हो? Why? What is the logic behind it? क्योंकि सारी दुनिया लिख रही है। बैड प्रैक्टिस। नहीं, बाकी सारी दुनिया लिखते आ रही है इसलिए लिखती हूँ। Where is our application of mine? ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम से ये कर दूंगी सर। सर मैं क्या मैंने कोर्ट को हटा देंगे? नहीं, कोर्ट प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, बस जज के नाम में मेंशन नहीं करूंगी सर। Exactly, it should not be mentioned there. यस सर। और यदि कोई जज ऑब्जेक्ट करते तो उनको थोड़ा सा समझाइए लॉ। नहीं, वैसे पता है मैं बताऊँ क्यों सर बट ट्रायल कोर्ट में और लोअर कोर्ट लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि दैट इज फॉर मैं आपको बताऊं बेटा जी, आप एक मुझे जरा बेटा जी से बात करते हैं। हर कोर्ट में 2-2 3-3 है। वो पुट अ नेम, मैम जरा एक मिनट पुट अ नेम फॉर आवर मेमोरी कि भाई हमारे इस कोर्ट में जाना। टिल द डेट मैंने बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 2012 टू 2024 10-12 साल के प्रैक्टिस में शायद 10 मैटर होंगे जो मैंने ट्रायल कोर्ट में मूव किए होंगे। आइदर वे पिटिशनर रिस्पोंडेंट, मैंने किसी में भी जज का नाम नहीं लिखा है, पोस्ट का नाम लिखा है।
क्योंकि मुझे अलाउ नहीं करता है, पहली बात, और किसी में भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं डाला। यस सर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिस नोबडी ऑब्जेक्ट्स। the practice and procedure में ये पार्ट प्रैक्टिस कहलाता है, और जिस प्रैक्टिस को हमने अडॉप्ट किया है वो कितना लॉजिकल है। यदि इसमें कुछ आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो उसको सही दिशा दिखाना हमारा काम है। Yes, sir. Sir, during fire inspection also mention the judge's name, sir. नॉट रिक्वायर्ड, वो कोर्ट में लग रहा है जज के। आप जरा समझिए, मैंने बहुत जगहों में मैंने देखा है कि जज का नाम एड्रेस नहीं होना चाहिए। इवन स्टेशन जज, सिंगल जज, डबल जज, ये कहने के बजाय आप सच एंड सच जज, सच एंड सच, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। वो उसमें क्या फीलिंग क्या आती है, व्हाट वी आर एड्रेसिंग। मतलब मैं सिसर सर के बारे में थोड़ा एक बात मैं बताऊं। शुरू में मैं कुछ जजेस को लेकर परेशान रहता था सुप्रीम कोर्ट में, कि शुरू में कि ये तो बड़ा मैंने केसी टिकट हो गया, ये भी हो गया, मतलब यू नो सो मेनी chaos वाज इन माय माइंड। और लगता था कि मैंने कई बार लगता था कि ये जज मतलब जो है ना हमेशा रहे तो अच्छा है, ये जज रिटायर कर जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने ये कहा है कि राजीव जी, वी आर नॉट एड्रेसिंग टू द मैन, वी आर एड्रेसिंग टू द कोर्ट। Just try to realize the differences. True, sir. The man will come and go, institution will alive there. Yes, sir. आप जरा सोचिए, यदि आप लिखिए जैसे यहाँ अजय नयन है फॉर एग्जाम्पल, इन द कोर्ट ऑफ, सॉरी ये अजय नयन है और यहाँ पर हमारे, आप ये इमेजिन कीजिए कि यू आर राइटिंग इन द कोर्ट ऑफ संतोष गुलेरिया मैम सपोज, और वो उनका ट्रांसफर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, और दूसरे के सामने वो मैटर आ रहा है आफ्टर ट्रांसफर, क्या वहां नाम में करेक्शन अमेंडमेंट नहीं रिक्वायर्ड है? अब तो Yes, आपका sir. नाम बदलना चाहिए। या फिर यदि ऐसा नहीं किया जाए तो पूरी फाइल संतोष मैम अपने साथ लेकर के जाए जहां हो जाए। डज इट पॉसिबल? No, sir. No. द लॉजिकल थिंग इज कि आप उस कोर्ट को कहे पटियाला हाउस कोर्ट, मैट्रिमोनियल कोर्ट, उस कोर्ट को जो भी प्रोसाइड करेगा वो वहां पर हैंडल करेगा, isn't it? Yes, sir. हाई कोर्ट में हम कहते हैं टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपेनियन जजेस। ऊपर में लिखते हैं इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, वहां ये थोड़ी लिखते हैं इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली बिफोर दिस पर्टिकुलर जज कोर्ट। मैं आपको बताऊं ट्रायल कोर्ट में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, व्हाई वी राइट नेम, आई टेल यू बिकॉज क्या होता है वहाँ पे मान लो दो कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट या तीन, किसी साकेत कोर्ट में तो तीन है, तो अगर वहाँ पे हम एक क्रिमिनल भी है वहाँ पे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस दैट गोज टू द क्रिमिनल कोर्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड फैमिली कोर्ट। तो क्या होता है जब हम वहाँ पे, यहाँ पे तो आराम से आप सुप्रीम कोर्ट में तो डिफरेंट है, तो एक ही को जाता है सीजीआई को। वो यहाँ पे क्या है, सपोज यू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द हमारा एक यहाँ पे कुलविंदर कौर है मैडम, तो अगर हम वहाँ पे एक एप्लीकेशन ऊपर रोहित जी बैठते हैं, राजेश जी बैठते हैं, अगर हम नहीं लिखते या तो हमें पुलिस स्टेशन याद हो, क्योंकि हमें पुलिस स्टेशन नहीं याद रहता है, हम क्या करते हैं नाम अगर नहीं लिखेंगे ना दैट वो वही बोलते हैं कि भाई किसकी कोर्ट है। सो इन फैमिली कोर्ट में हम नाम लिखते हैं तो इट गोज मैं आपको ये बताऊं, अब मैं that is only, it is only for the sake of convenience, not समझ गया, आप समझ गया आपकी बात को। इट इज आइदर वे फाइंड आउट दिस डिफरेंट थिंग। यदि एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप ये बताइए सीजेएम का कोर्ट एक ही होगा या अलग अलग होगा? वो तो एक ही होगा ना। उसके अंदर में जितने भी एमएम है या महिला कोर्ट है, वहां भी लिखाता है ना महिला कोर्ट 1, महिला कोर्ट 2, महिला कोर्ट 3, एंड हर कोर्ट को असाइंड है पर्टिकुलर जुरिडिक्शन। That is true, that is, वो हमें याद नहीं रहता कौन सा महिला तो हमारा प्रॉब्लम है ना मैम, और नहीं हमको याद नहीं रहता ये बात नहीं, इसलिए हम नाम लिखते हैं, अदरवाइज we are not bothered to find out, we are simply not bothered to find out। वो हम अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। yes
That is true. और इसी चीज को कोर्ट भी इग्नोर कर रही है। Right. ये नहीं होना चाहिए। That is correct. That is correct. Yes, sir. We also write quote number 1, quote number 2, whatever quote it's Exactly. family quote. That is sufficient. वो particular कोर्ट का इंडिकेशन है, ADJ 1, ADJ 2, fast track कोर्ट 1, fast track कोर्ट 2, this is more than sufficient. कोर्ट नंबर नहीं देना है, सिर्फ एड्रेस करना है। नहीं, sometimes it is required, यदि वहां पर एक particular, हाँ वो भी not required है, but thing है जैसा भी convenient है particular कोर्ट पे जाना है तो उसके लिए। Actually, it is depends on the police station. हमको police station Exactly. So once you write the police station, then exactly. Then there is no problem. Then there is no problem. Yes. So we should write that. Yes, yes. तो ये कहानी। Anything else? थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। Please, Bharti ma'am.